इतिहास रचिला भारत आदित्य एल1 सफल उत्क्षेपण होईछि। श्रीहरिकोटारू आदित्य एल1 उत्क्षेपण सफल होईछि, जार सीधा सड़क दृश्य सीधा प्रसारण आपण माने इसरो तरफरू टीवी स्क्रीन रे देखि पारुथिले। भारतर प्रथम सौर्य मिशन सूर्य को अनुध्यान करिबो आदित्य एल1 एवं परीक्षण पथरे वर्तमान आदित्य एल1 सैटेलाइट रहिछि। सूर्य संपर्क रे गवेषणा पई इसरोर प्रथम अभियान हेउछि हमर आदित्य एल1 एवं जहार सीधा सड़क दृश्य आपण माने देखुथिले। आदित्य एल1 रो सफल उत्क्षेपण वर्तमान होई सारिछि। गोटे परे गोटे फेज देई वर्तमान आगो को बढ़ी चलीछि आदित्य एल1। जे भली भाबरे हमें जानि छियै जे आदित्य एल1 पृथ्वीर बाह्य स्तर को जाई एक गोटे स्थान रे रहिबो, ता हेउछि लैंग्रेज L1 पॉइंट। सही पॉइंट रे रही सूर्य विषय रे परीक्षण करिबो। सूर्य एक उत्तप्त पिंड, सकल शक्तिर आधार। आमे माने सूर्य को देवता रूप में मध्य पूजा करि थाए, सूर्य को आमे पूजा करि थाए एवं आज आमे सूर्य को विषय रे परीक्षा करिबा पई, तांको विषय रे अनेक किछि जानिबा पई, तांको विषय रे अनेक किछि तथ्य हासिल करिबा पई हमर अभियान आरंभ करिछे। एवं प्रथम पर्याय जहाँ आमे कहूछे उत्क्षेपण थिला 11:50 मिनिट। ठीक 11:50 रे आदित्य एल1 सफल उत्क्षेपण करा जायछि, जहार सीधा सड़क दृश्य आपण माने देखि पारुथिले टीवी स्क्रीन रे। गोटे परे गोटे पर्याय देई वर्तमान आदित्य एल1 आगो को बढ़ुछि। आदित्य एल1 स्पेसक्राफ्ट श्रीहरिकोटारू प्रक्षेपण परे प्रथमे एहाकू पृथ्वीर निम्न कक्षपथरे रखाजिबो। चंद्र अभियान बेले कक्षपथ बढ़ई बढ़ई आम बड़ करथिले, तापर सेमती आमे ताकू कक्षपथ को बड़ करबा एवं तापर से सूर्य आड़ को जीव। पाखापाखि आमको 127 दिन समय लगे। आ सेठी पहुँचला परे से आमे ताकू अवस्थापित करबा L1 पॉइंट रे, जोटा कि आपण जानते लाग्रेंज पॉइंट, जोटी कि पृथ्वी और चंद्रर आकर्षण शक्ति शून्य बोली रहिबो। तो सेटा टिके चैलेंजिंग हम, तेणु आमको से दिन को अपेक्षा करने को पड़ो जितेबाला कि से पहुँचब और ताकू आम निर्दिष्ट कक्षपथरे अवस्थापित करवा प्राय 4 मास पर। तेणु से दिन अपेक्षा करवा और आम आशा करवा जे सब जिन ठीक ठाक जीव आ सब जिन सफल हम। चंद्र अभियान भली आम सूर्य अभियान जो सूर्य अध्ययन पे अभियान आदित्य एल1 संपूर्ण रूप सफल हम। देखो आमर जो लॉन्चिंग प्रक्रिया करागला ठीक 11:50 आरंभ करागला। आपण देखिथिबे जे प्रथम प्राय 2-3 मिनिट पर तार फेज 1 सरीगला, जोटा कि आमर कठिन इंधन थिला। आमर रॉकेट गोटे उपरको छाड़िया पे यथेष्ट बल दरकार पड़ी थाए। तो से कठिन इंधनटी आमको पाखापाखि 40 किलोमीटर उपरको नहीं जाइतला आ तार से पार्टी जलिकी समुद्र पड़ जाइथिबो। तापर प्राय 2-3 मिनिट काल आमर लिक्विड इंधन बा तरल इंधन व्यवहार करागला, जहाँ आमको प्राय 150 किलोमीटर उपरको नहीं जाइतला। सेटा प्राय 4 मिनिट पर होइतला। 5 मिनिट समय 16 मिनिट पर्यंत जो आम नहीं कक्षपथरे छाड़िले से समय आमर क्रायोजेनिक इंजिन व्यवहार करा जोटी कि आम तरल और कठिन उभय इंधन व्यवहार करते। आईटा हूँ सबुठ शक्तिशाली इंधन बा शक्तिशाली इंजिन, ताकू नहीं से द्वारा आम ताकू नहीं निर्दिष्ट लोयर कक्षपथरे रखिदे पारिछे। तो निश्चिंत भाव में से किछि दिन पृथ्वी चारिपटे घूरी बुलिब लोयर कक्षपथरे, तापर आस्ते आस्ते सी आउटे बड़ कक्षपथ को जीव। आपण जदि मन थी आम जो चंद्रयान पठेइथिले ता सहित 2टी मॉड्यूल थिला। गोटे हूँ लैंडर मॉड्यूल आ गोटे थिला प्रपल्सन मॉड्यूल। प्रपल्सन मॉड्यूल हूँ प्रकृत में गोटे छोट रॉकेट जी कि सब प्रक्रिया करें। तेणु से प्रक्रियाटा बर्तमान पाखापाखि तार गोटे निजस्व प्रपल्सन मॉड्यूल रही सहित लगिकी रॉकेट गुड़े रही। तो ताकू यही ऑर्बिट्रु चंद्र जाए सूर्य जाए पहुँचापी से प्रपल्सन मॉड्यूलटे इंटीग्रेटेड प्रपल्सन मॉड्यूल काम कर। देखो प्रथमे आम ताकू गोटे पृथ्वीर एकदम छोट कक्षपथ रखीचे। यही भाया प्रक्रिया जीवा द्वारा आमर बहुत इंधन बंचुची आ पैसा कम खर्च होपर। तार आम कक्षपथ को आउटे बड़ करदेव, से गोटे अंडाकृति कक्षपथरे बुलूब। जितेबाला से पृथ्वीर निकटवर्ती थी से आम टे तार बेग बढ़ई दौ, से से आउ टे बड़ कक्षपथरे बुले। ये से 11-12 दिन बुलला तापर धीरे 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 आमर चंद्र आड़ को से गति कर सूर्य आड़ को गति कर।
हाँ देखो यात्रा समय सी किसी हुए तो खाली इनफॉरमेशन बा कौन फोटोग्राफी दे पारे किंतु यात्रा समय कौन प्रकार एक्सपेरिमेंट हबार ना सेठी जाई जतले पहुँचला अवस्थापित करा टिके समय लगे तापर आम कि डाटा पाइबा जोटा कि आम धीरे धीरे ग्रहण करवा आईटा गोटे माने आमर सफल अभियान हेले आम निजक विश्व में प्रतिष्ठित करिपरिबा जे प्रकृत में हाँ आम चंद्र पर मध्य सूर्य अभियान में सफल होइचु आ एटा पे आम पे गोटे बहुत बड़ कथा होबे जाउछि प्रथम थोड़ी पे सोलर मिशन एटा किंतु को तथ्य चाहूची इसरो कोन तथ्य सब मिलबा को क्षेत्र रे आगु को सहायक हबो कि या पर कोन मिशन जे नबा को छै मके पड़िबो देखंतु जो तथ्य गुड़िक आम आशा रखीचे से प्रथम कथा आम अध्ययन करवा सूर्य विषय आ सबुठु बड़ तथ्य आम पाइबा जोटा 5 वर्ष धरी आमको से कंटिन्यूअसली दब विभिन्न प्रकार तथ्य जमती कि से अल्ट्रावायोलेट रे रे गोटे फोटो दब सूर्यर सेटा हूँ प्रत्येक मिनिट रे गोटे गोटे फोटो पठेब अर्थात प्रत्येक दिन 1440 पाखापाखि फोटो पठेब 5 वर्ष धरी तो सहीटा को आम जो अध्ययन करवा ताद्वारा आम जापर जे प्रकृत सूर्यर जो चेंजेस हो जो प्रक्रिया चली कौन बदलुची केते समय बदलुची कौन होता गोटे आम बहुत बड़ तथ्य हम ता छड़ा जो आमर कोरोनाल इजेक्शन मास आम जोटा कहे माने बहुत समय सूर्य कणिका गुड़े छिटकी हो पलि आसता तो से कणिका गुड़िक कहीं सृष्टि होता सृष्टि होगा पूर्व कौन कौन प्रक्रिया दे सूर्य गति करुच्ची गलापर कौन प्रक्रिया रोचे तो से सब जिन को आम अध्ययन कहीपर जे प्रकृत में कहीं एपरी हो गोटे पूर्व अनुमान करने आम दरकार पड़े जमीक झड़ हेल्ले आम पूर्व अनुमान करुचे पृथ्वी में सेमती सूर्यर झड़ को पूर्व अनुमान करने आमर स्टडी गोटे प्रमुख लक्ष्य बोली आम कहीपर देखो तांकर मिशन जहाँ थिला से एक्सपेरिमेंट कर मिशन किसी तथ्य को आधार करी आमर ये मिशन टी करा आ सबुठ बड़ कथा आमर आम आम निजक प्रतिष्ठा करने को चाहूँचे आम देखा देवाक चाहूँचे विश्ववासी को जे आम कम खर्च सफलतार सहित चंद्र को जापरचु सूर्य को जापरचु L1 पॉइंट रे जाई रखिपारचु एवं विकसित राष्ट्र भाव में आम वैज्ञानिक परीक्षा करूँ बहुत गुड़े तेणु निश्चिंत भाव में यहाँ गोटे आम देश को गोटे प्रतिष्ठा बढ़ेब जोटा कि भविष्य में आमर गोटे अर्थ आमदानी स्रोत हम भारत पे महाकाश क्षेत्र में आमर प्रतिष्ठा बढ़े सहज भाषा बुझे कि L1 पॉइंट कौन ये पॉइंट लॉन्ग रेंज पॉइंट देखु L1 पॉइंट हूँ आमर पृथ्वी सूर्य जो रही आम सीधा गोटे सरल रेखार जोड़ीदे पृथ्वी ठारू आम जब 15 लाख किलोमीटर जावा आम एभली गोटे स्थान में पहुँचा जोटि कि पृथ्वीर माध्याकरण शक्ति और सूर्यर माध्याकरण शक्ति सामान रही तो सहीटा को आम L1 पॉइंट कहूँ से भाया विश्व माने आमर महाकाश में 5टी बिंदु रही जहाँ लाग्रेंज पॉइंट कहुए L1 L2 L3 L5 जोटी शक्ति दुटाकर सामान थाए आम जाचे जो माध्याकरण शक्ति से निर्भर करे जो पिंडटी रही तार वस्तुत्व उपर एवं जो पिंड उपर से प्रभाव पकाउछि तार दूरता उपर सूर्य टू 14,85 लाख दूर रही जेतिकी बल एक्सपीरियंस करवा आमर आदित्य L1 पृथ्वी टू मात्र 15 लाख किलोमीटर दूर रही सेतिकी करिवो कारण पृथ्वीर ओजन बहुत कम सूर्य तुलन में तेणु से पॉइंटा को आम बाछीचे ये जे सेठी आम जदि अवस्थापित करदे पारिबा आमर महाकाशयानटी को सेठू आमर कौन इंधन दरकार पड़ोनी से गोटे हेलो पॉइंट भितर घूरी बुलिबो पूर्वर आमर से गोटे अभियान रही नासा पठेला 1996 मसीह सोहो नामक सी रही कार्यक्षम करुच्ची L1 पॉइंट पाखे तेणु L1 चारिपटे आम भली घूरी बुलिबा तेणु सेठार रहिले आम सूर्य को 24 घंटा 365 दिन सीधा सड़क देखिपर आ पृथ्वी को देखिपर तेणु से आम कहीपर से गोटे एडभांटेज पॉइंट आम तेणु से पॉइंट चयन कर लाइव तो डेरी अच्छे आप आपण माने शुणुले वरिष्ठ वैज्ञानिक शुभेन्दु पट्टनायक जो सब विस्तृत तथ्य से रखिंट वर्तमान सफलतार सहित आदित्य L1 उत्क्षेपण हो सारी श्रीहरिकोटारू आदित्य L1 सफल उत्क्षेपण हो सारी PSLV C-57 रॉकेट माध्यम उत्क्षेपण करा आगो को वर्तमान गोटे पर गोटे पर्याय दे L1 पॉइंट रे
पहुंचब आदित्य एल1 किभली भाव में आगू बढ़ से बाबद विस्तृत सूचना से रखिंट आउे कहवाक चाहूँगी आदित्य एल1 स्पेसक्राफ्ट श्रीहरिकोटारू प्रक्षेपण पर प्रथमे यहाकू पृथ्वीर निम्न कक्षपथरे रखाजिब परे कक्ष को अधिक दीर्घ वृत्ताकार कराजिब परे स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वीर माध्याकर्षण क्षेत्ररू दूर लैंग्वेज पॉइंट बा एल1 अभिमुखे पठाजिब जेभली भाव में कहुला जे 5टी लैंग्वेज पॉइंट रही L1, L2, L3, L4, L5 L1 रे आदित्य L1 जाई पहुंचीब एवं सेथिपाई गोटे परे गोटे पर्याय वर्तमान अतिक्रम करी चली पृथ्वीर माध्याकर्षण क्षेत्ररू बाहरिबा परे आदित्य L1 रो गुरुत्वपूर्ण पर्याय आरंभ हेब क्रूज स्टेज रहुछि क्रूज स्टेज हेबा परे L1 चारिपटे एक हेलो कक्षपथरे प्रवेश करिबो हेलो ऑर्बिट रे प्रवेश करिबो L1 पर्यंत पहुंचीबा को प्राय 4 मास समय लगे कारण पृथ्वी सूर्यर दूरता आम जो भाव में आलोचना करें 15 कोटी किलोमीटर किंतु L1 बा लैंग्वेज पॉइंट जहाँ रही होउछि पृथ्वी 15 लाख किलोमीटर दूर एवं 15 लाख किलोमीटर अतिक्रम करने आदित्य L1 को 4 मास समय लगे 4 मास समय नेबा परे आदित्य L1 लैंग्वेज पॉइंट L1 रे जाई पहुंचीबो एवं सेठारे पहुंचीबा परे अनेक किछि तथ्य सौरमंडल बाबद आमको देव L1 कौन L1 पॉइंट कौन से बाबद में सूचना रखुले आउ थे कही रखुछु लैंग्वेज पॉइंट होउछि पृथ्वी सूर्य मध्य एक स्थान जो दुईटी वस्तु मध्य माध्याकर्षण बल एभली भाव में कार्य करिथाय जेपरि सेठारे एक वस्तु दीर्घ समय धरी संतुलित बा स्थिर अवस्था रही परिबो प्रसिद्ध इटालीय फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुई लैंग्वेज नाम एहार नामकरण करा जायछि साधारण भावे एहाकू L1 भावे जना जाए एभली 5टी पॉइंट सूर्य एवं पृथ्वी मध्य रही जोंठी सूर्य एवं पृथ्वीर गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होइथाए एवं सेंट्रीफ्यूगाई फोर्स हो जाए समान रही थाए उभयंकर माध्याकर्षण शक्ति एभली स्थान रे कोनोसी वस्तु को रखागले ताहा सहजरे स्थिर रहिबा सह कम शक्ति मध्य आवश्यक करिथाए प्रथम लैंग्वेज पॉइंट पृथ्वी ठारू सूर्य मध्य प्राय 15 लाख किलोमीटर दूर में रही एवं आदित्य L1 को आम उत्क्षेपण करिचे लैंग्वेज पॉइंट L1 को एवं जेउठिपाई सेठारे पहुंचीबापाई ताकु 4 मास समय लागिबो एवं वर्तमान गोटे परे गोटे सफल उत्क्षेपण होईछि गोटे परे गोटे पर्याय रे आगो बढ़ी चली आदित्य L1 एवं सेठारे पहुंचीबा परे अनेक किछि तथ्य हासिल करबाकू चेष्टा करिबो आदित्य L1 भारत रे यह होछि प्रथम सौर्य मिशन सूर्य को अनुध्यान करिबो आदित्य L1 सैटेलाइट सूर्य संपर्क में गवेषणा पई इसरोर ये प्रथम अभियान सूर्यर वायुमंडल एवं चुंबकीय क्षेत्रर अनुसंधान लक्ष्य रखा जाइछि सूर्यर कोरोना सौर शिखा सौर झड़र अध्ययन करिबो सूर्यर कोरोना मंडल विकिरणर परीक्षा करिबो आदित्य L1 सूर्य वायुमंडल रे परिवर्तन को मध्य लक्ष्य करिबो केते परिमाण रे केते समय रे किभली भाव में परिवर्तन हेउछि सूर्यर वायुमंडल रे बा सौर्य मंडल रे पृथ्वी उपरे सौर्य वायुमंडलर प्रकोपर मध्य परीक्षण करिबो the near Earth space weather because these can have an effect on the life on Earth. If you remember Quebec, there was an event when the power lines were snapped few years ago. That was because of an extreme solar event. So to keep an eye on the surroundings of Earth, we need these measurements, and apart from that, for solar wind observations also, these measurements will be crucial. Thank you. Thank you very much, sir. So now we move on to Dr. Anuj Nandi. So what is the importance of solar flares and the impact in heliospheres, and how does Aditya L1 contribute to all of this? Good afternoon, viewers. As my colleagues already pointed out the importance of this mission and the instruments about. So the thing is, as you know, that solar flares are the energetic and explosive energy release in few seconds to minutes time scale, and it is order of 10 to 27 arcs to 10 to 32 arcs. Now the thing is, these solar flares, why it is important, as because the solar flares actually tells the dynamics and activity in the sun. So the thing is, what there are two unique instruments built by URAV Satellite Center that is going to cover the solar flares from 1 kV to extremely high energy, around 200 kV. And we know that visible sun is only 6000 degree Kelvin temperature, whereas the
outer surface of the sun is million degree Kelvin. So the thing is why there is disparity. So I think these two instruments along with the other two instruments VLC and SUIT, we are going to address this $1 million questions as well as why there is difference. Thank you. Thank you very much, sir. And now I'd like to go back to Dr. Anil Bharadwaj. So there are many satellites that are sent to the space by other nations. So what makes Aditya L1 different from these satellites? Well, that's a very good question because first of all, let me again tell you that India will be the third, or ISRO will be the third space agency to have a mission at L1 point. And I just mentioned that it is multi-wavelength, multi-instrument, and multi-direction, and it measures particle, field, and radiations. So you don't have such kind of satellites existing at L1 point so far and currently. That makes Aditya L1 absolutely unique because we are going to measure remotely, in situ, and particles and fields. I was also mentioning about multi-direction, and that is coming from the ASPEX payload, which stands for Aditya Solar and Particle Experiments. And this is going to measure particles ranging from 100 EVs going to several MeVs, which is essential for us to know because when the CMEs are happening or the sun is quite angry, the plasma which is coming out from the sun ranges from several EVs to several MeVs. And therefore, we should know in what direction the plasma is coming and whether the plasma is getting accelerated in between when it comes from sun towards earth. And therefore, there is a multi-direction information which is available from the ASPEX payload because it consists of two sensors, SWIS and STEP, essentially giving you in two different energy bands. And therefore, we'll be able to quantify the CME, CIRs, and all the processes which is happening on the sun, which gives out coronal mass ejections. Thank you. Thank you very much, sir, for your remarks. And now finally we move on to the principal scientist, Dr. Sankar Subramaniam. So how does the Indian science community seek to capitalize on ISRO's space capabilities, especially these observatory missions like Astrostat and Aditya L1? Yeah, so now ISRO has established that it has a capability to send observatory class missions anywhere in the interplanetary medium. ISRO also is developing capability for small satellite missions like a nanosat, CubeSat, as well as the small satellite capability. And that is something which especially a heliophysics community could utilize it because we can, at a low cost, we can launch many more such instruments which are essential for heliophysics community here in India. So, and also the bigger mission takes its own life cycle because it requires technologies to be developed for a bigger missions. So in between these big missions, if we capitalize on these small satellite missions, and that will enhances the science capability of our country to the next level. And as you know, the science and technologies are always synergized. As the technology improves, your science improves. When I started my career in solar physics, I started with a photospheric magnetic field. Now we are in a position where we can do coronal magnetic field with Aditya L1, which was not feasible when I was doing my PhD. So similarly, as we move on and as the technology starts to improve, we would be able to generate much more capable instruments, much more compact instruments, which will enable us to do much more science than what we can currently do. So we look forward to capitalize on ISRO's capabilities, both at the large scale as well as at the small scale instruments, and also its capability for developing new technologies in the near future. Thank you very much, sir. That was very interesting. And to end this, I have a last question to Dr. Dipankar Banerjee. And it's about what kinds of outreach is possible through this launch to energize the scientific community? This is a very, very important question, and we are proud to be Indian now after the Chandrayaan success. I think it's just not the students, it's the entire country is excited. And we got this opportunity to now travel towards sun. So it is very important that the younger generation, comes into the research and also utilizes the data. These scientific missions are for the community.
and it has to be the community driven. So some of our scientists, who have been engaged with this mission for decades, we understand what is expected to be, this data. But the younger generation, they need to be trained. And so for that reason, we also have a ADITYA support cell at Nainital, and we are going around in the country. We are regularly conducting workshops. So through these workshops and training program, we really want to reach out to other, people who are particularly in the universities or IITs, because they have so far not been directly involved with the ADITYA mission. So I think we are really, really going out, and we expect that the youngsters, the next generation will come and utilize this data, because the data is for the community. So unless, we have more users, we will not be able to effectively utilize the data, scientific data which is coming, and the way we can help the community at large. Thank you. Thank you very much, sir. I think it is very important for us also to reach out to schools and colleges, because the younger generation should be told about. आपण माने शुणुले किभली भाव में वरिष्ठ वैज्ञानिक मानकर मत रहुला जे किभली प्रोसेस रे आमे आदित्य L1 को उत्क्षेपण करिछि, कोन हमर लक्ष्य रही, किभली भाव में भारतर प्रथम सौर मिशन सूर्य को अनुध्यान करिवो। कारण आमे समस्ते जानिछे सूर्यंकर 7टी परस्त रहुछि, 7टी लेयर रहुछि, से सबु लेयर को भेद करी सूर्यंकर समस्त तथ्य गुढ़ तथ्य को वर्तमान आदित्य L1 परीक्षण करिवो। कोर बा अभ्यंतर तापमात्रा आम जदि जानुछे सूर्यंकर कोर बा अभ्यंतर तापमात्रा 1.5 कोटी डिग्री। समस्त को जना जितेबाला आमर राज्य में 50 डिग्री तापमात्रा हो जाउछि, सेतेबाला देह हाथ किभली जलिला भली होउछि। सूर्य एक उत्तप्त पिंड एवं कोर बा अभ्यंतरीण क्षेत्र में सूर्यंकर तापमात्रा रहुछि 15 कोटी डिग्री एवं सूर्य पृष्ठ बा फोटोस्फियर तापमात्रा सूर्यंकर बाह्य जितेबाला कोर रु आमे बाहर को आसुछे ताहले तापमात्रा धीरे धीरे कमी कमी आसुछि एवं फोटोस्फियर जो रहिछि तार तापमात्रा रहुछि पाखापाखि 6000 डिग्री 15 कोटी 1.5 कोटी डिग्री रु 6000 डिग्री को वर्तमान कमिछि। किंतु सबुठारु बड़ प्रश्न रहुछि बा गोटे बड़ तथ्य आधार करिवार रहुछि समय जे कोरोना स्फियर को नहीं, कोरोना स्फियर आहुरी बाह्य स्तर सबुठु बाह्य स्तर कोरोना मंडलर तापमात्रा किंतु 10 लाख डिग्री। ये गोटे बड़ प्रश्न साइंटिस्ट मानक पई एवं ताकू भेद करिबा पई सौर मिशन रो मूल लक्ष्य रहुछि। जेतेबेले कोनोसी एक उत्तप्त पिंड पाखरु दूरकू आमे जाई थाउ सेतेबेले तापमात्रा मध्य धीरे धीरे कमी थाए, किंतु सूर्यंकर आभ्यंतरीण बा जेतेबेले कोर एरिया रे 1.5 कोटी डिग्री रहुछि धीरे धीरे ताहा कमी फोटोस्फियर पाखरे 6000 डिग्री की आसुछि। फोटोस्फियर पाखरु बाहर को जेतेबेले बाह्य अभ्यंतर जेते बाह्य को आमे आसुछे सेतेबेले कोरोना मंडलर तापमात्रा रहुछि 10 लाख डिग्री। ताहा बहुत दूर रे रहिछि, किंतु एते मात्रा रे कोरोना मंडलर तापमात्रा काई ता हेउछि वर्तमान समय सबुठारु बड़ प्रश्न एवं तार रहस्य खोजी बाहर करिवो आदित्य L1। सूर्यर माध्याकर्षण शक्ति को मध्य देई जाई थाए कोरोना मंडलर कणिका। कोरोना मंडलरू शक्तिशाली सौर झड़ सृष्टि होई थाए। सूर्यर चुंबकीय विकिरण शक्तिशाली पृथ्वी आड़ को माड़ी आसी थाए। पृथ्वीर चुंबकीय क्षेत्र किंतु आमको सौर झड़रू सुरक्षा दे थाए। किंतु ए सबु बाबद में वर्तमान आदित्य L1 परीक्षण करिवो। पृथ्वी ठारू 15 लाख किलोमीटर दूर रे रहिबो। L1 पॉइंट रे रहिबो, सेठारे रही अनबरत 5 वर्ष पर्यंत वर्तमान काम करिवो आदित्य L1। 5 वर्ष धरी L1 पॉइंट रे रही परीक्षण करिवो। सूर्यर कोरोना स्फियर, फोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर रो अनुध्यान करिवो। सौर पवन, एक्सरे विकिरण, सौर कणिकार टेक्निक अनुध्यान करिवो। कोरोना मंडलर रहस्य भेद करिवो जे सूर्यंक ठारू सबुठारू बाह्य रे कोरोना मंडलर तापमात्रा एते अधिका काहीकि। ये सबु बाबद रे वर्तमान आदित्य L1 सफलतार सहित परीक्षण करिवो ए आशा समस्तंकर। कारण जो निर्धारित समय रहितला ठीक 11:50 रे उत्क्षेपण करा जाइछि आदित्य L1 को एवं गोटे परे गोटे फेज देई वर्तमान आगो बढ़ी चली आदित्य L1। लैंग्रेज पॉइंट L1 रे जाई पहुंचबो से 4 मास समय लागिबो। पृथ्वी पृष्ठरू ताहा 15 लाख किलोमीटर
दूरे रही सेठारे पहुंची अनेक गुड़िए गुढ़ तथ्य आमको देव बोली समस्तंकर आशा रही कारण जो भली भाव में चंद्र अभियान रु वर्तमान आम अनेक किछि तथ्य पाउछे जो सबू तथ्य को लक्ष्य करा जायतिला सेथिरु गोटिए गोटिए तथ्य सामना को आसुछि एवं सेथिरे मध्य पेलोड रहितिला लैंडर विक्रम रोभर प्रज्ञान रे रहितिला समस्त पेलोड एने कार्यक्षम समस्ते अनेक किछि तथ्य देउछंती सेही भली आदित्य L1 रे मध्य 7टी पेलोड रहिछि एवं से सबु अनेक किछि तथ्य आधार करिवो एवं इसरो को पठाइबो अनेक किछि गुढ़ तथ्य मिलिबो सूर्यंक बाबद रे ए आशा समस्तंकर आमे समस्ते जानिछे जे सूर्यर अध्ययन पई वर्तमान सुधा अमेरिकार महाकाश गवेषणा एजेंसी नासा यूरोपीय स्पेस एजेंसी एवं जर्मन एरोस्पेस सेंटर पृथक पृथक भाबरे हेउ बा मिलित भाबरे हेउ मिशन करि सारिछंती एहा बाद नासा एकाधिक सूर्य मिशन मध्य करिछि एथिरे एस होउ विंड हिनोड सोलार डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी विंड स्टीरियो शामिल 16 मिशन को नासा यूरोपीय स्पेस एजेंसी रे मिलित भाबरे लॉन्च करा जायतिला किंतु गोटे बड़ रहुछि जिनिस जे सूर्य अध्ययन रे वर्तमान पर्यंत सबुठारु बड़ उपलब्धि नासार पार्कर सोलार प्रोब मिशन पाइछि जहा कि सूर्यर सबुठु निकटरे पहुंचीबारे एकमात्र महाकाशीय यान समस्त आमे जानिछे पृथ्वी ठारू सूर्यर दूरता 15 कोटी किलोमीटर रहुछि एवं नासा पठाइथिबा पार्कर सोलार प्रोब मिशन सूर्यर अति निकटरे पहुंची लगभग 14 मिनट बाकी हैं हमारे अंतरिक्ष यान आदित्य L1 को अंतक्षेपण के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कालावधि जब अंतरिक्ष यान या हमारा यान हमारी दृष्टि से दूर हो जाता है, इस कालावधि में ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से बाहर जा चुका होता है और यान के ऑन बोर्ड कंप्यूटर पर टेलीमेट्री स्टोरेज पर यान के महत्वपूर्ण आंकड़े सेव किए जाते हैं। जब यह हमारे तय ग्राउंड स्टेशन की रेंज में आते हैं तब इन आंकड़ों का प्रसारण होता है और वहां से इनकी पुष्टि की जाती है कि यान इस दौरान किन गतिविधियों से गुजरा। Fourth stage performance normal. The fourth stage performing normally. The second burn is expected to last for 472 seconds. यह चतुर्थ चरण है PSLV XL रॉकेट का। इसमें 2.5 टन के नोदक का इस्तेमाल हो रहा है। यह तरल नोदक हैं। इसमें 2 इंजन लगे होते हैं, हर एक 7.33 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। इस तरह कुल प्रणोद 14.6 किलो न्यूटन का होता है। Plus 55 minutes. इस प्रज्वलन काल में इसे 472 सेकंड तक प्रज्वलित रखा जाएगा। वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं। We are close to 55 minutes 30 seconds past the launch. PS4 stage currently burning for the second time. Fourth stage performance normal. Intended trajectory closely matching the prediction. Presently the shipborne terminal is acquiring the signal. Few seconds later there will be another no visibility phase before Koru starts to acquire signal. जी अभी द्वितीय बर्न चालू है PS4 स्टेज का। अभी कुछ 200 और सेकेंड जलकर यह शांत हो जाएगा।
सूर्य एक बड़ा और हमेशा हमेशा से एक समीप का सितारा रहा है हमारे लिए। असल में यह गर्म आग का गोला है जो अनगिनत हाइड्रोजन एटम्स के फ्यूजन रिएक्शन से ऊर्जा प्राप्त करता है, और इस ऊर्जा से इस सौर मंडल को एक परिवार की भांति समेटे हुए है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य ही हमारी ऊर्जा स्रोत है और इस जीवन जो हम जानते हैं उसका भी स्रोत है। Loss of signal for shipborne terminal. The next telemetry station is Kuru. The telemetry signal break will be approximately 205 seconds. During this non-visibility period, ground trace and flight parameters will not be updated. यान फिर से अंतर्दृष्टि हो चुका है, हमारे ट्रैकिंग रेंज से बाहर है। अगला ट्रैकिंग स्टेशन कुरु स्थित फ्रेंच गयाना स्थित कुरु स्टेशन से हमें आंकड़े उपलब्ध होंगे कुछ ही समय में। After being injected into the space, the Aditya L1 will not travel directly to the L1 point. Transfer maneuvers will be performed to position the spacecraft in a halo orbit. Aditya L1 will first be made to perform maneuvers in Earth orbit. Adjustments will be made in its orbital parameters. After ascertaining the normalcy of the craft, its systems, payloads, and the orbital parameters, burn to exit Earth's sphere of influence will be initiated. After exit from SOI, the cruise phase will start, and subsequently the spacecraft will be injected into a large halo orbit around L1. The total travel time from launch to L1 will take about 4 months for Aditya L1. इस दौरान आइए आपको अवगत करा दें आदित्य L1 के मुख्य उद्देश्य से। आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य है सौर गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराना और इन गतिविधियों का अंतरिक्ष मौसम के असर का अध्ययन करना। इस कार्य के लिए इसमें 7 भार लगे हुए हैं जिनकी मदद से आदित्य L1 फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के बाहरी परत के विभिन्न वेवलेंथ में प्रेक्षण कर सकेगा। विशेष वैज्ञानिक उद्देश्य इस प्रकार हैं: सूर्य के ऊपरी परत जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं इसके गतिकी का अध्ययन करना, क्रोमोस्फीयर और कोरोनल तापमान, आंशिक रूप से आयनिक प्लाज्मा की भौतिकी, कोरोनल मास इजेक्शन की शुरुआत और फ्लेयर्स का अध्ययन, सूर्य के कण की गतिशीलता के अध्ययन के लिए आंकड़े प्रदान करना और यथास्थिति कण और प्लाज्मा वातावरण के प्रेक्षण करना। +1 hour. वर्तमान में आरओडी ने घोषणा की अब चतुर्थ चरण को बंद कर दिया गया है, अब उसका थ्रस्ट कट ऑफ कर दिया गया है और वह बंद हो चुका है और इसकी भी पुष्टि हो चुकी है कि आदित्य L1 के अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। We are now eagerly awaiting the injection of the satellite, as we have the confirmation from the Range Operations Director that the thrust cutoff for 4th stage of PSLV has been achieved. We are 1 hour into the flight. कुछ ही क्षणों में कुरु स्थित ग्राउंड स्टेशन से इसकी पुष्टि की जाएगी। Highly anticipated event.
सीधा सड़क आपण मैंने देखुले कि भाव में भारतर प्रथम सौर मिशन वर्तमान आरंभ हो सारी गोटे पर गोटे पर्याय अतिक्रम कर सूर्य को अनुध्यान करने आदित्य L1 सैटेलाइट वर्तमान आगक आगक बढ़ी चली 4 मास समय लगे लैंग्वेज पॉइंट L1 रे पहुंचापी और सेठारे पहुंचा पर अनेक किछि तथ्य आमको सकल शक्तिर आधार सूर्यंक विषय प्रदान करिबो। सही सफलता को वर्तमान समस्तंकर अपेक्षा रहुछि।